association with CTPD India. I extend a warm welcome to each one of you to day two for our 7-day student and faculty development program on research methodology and academic publishing. Yesterday's session provide valuable insight into the foundation of educational research. Today we move ahead to an equally significant topic, research designing and sample techniques, which form the backbone of any sound of research investigation. We are pleased to have with us the eminent academician and researcher, Dr. Manoj Kumar Sharma, who will guide us through the various dimensions of research designing and sample techniques. Before we beginning the technical session, I request everyone to keep your microphone mute and active participate the chat box and questioning session. Welcome to resource person. It is the now my privilege from formally welcome our esteemed resource person, Dr. Manoj Kumar Sharma. Sir, we are delighted to have you us today. You rich academic experience, scholarly contribution and expertise in research methodology and undoubtedly enrich the learning experience to all participants. Research is not merely to collection of data, it is the systematically quest of for truth. The quality of research largely depending upon selected and appropriate research designing and sampling strategies. Enlightening us on the important theme, it gives the immense pleasure of introduce our eminent speaker, Dr. Manoj Kumar Sharma. Dr. Manoj Kumar Sharma is an accomplished educator, researcher, and academic leader, currently service as assistant professor in education, Kanhaiya Lal DAV PG College, Roorkee, Uttarakhand. He hold MSc Chemistry, B.Ed, M.Ed, MPhil education, PhD education, NET education. With nearly 20 years of undergraduate teaching experience and over 5 years of postgraduate teaching experience. He has taught diverse student groups, including international students from countries such as Bangladesh, Nigeria, Thailand, Ghana, Zimbabwe, Bhutan, and Nepal. His academic contribution include more than 35 research papers and book chapters published in reputed national and international journal and editing volumes, along with the authorship and authorship of 7 books on education, educational technology, higher education, emotional intelligence, and guidance counseling. Dr. Sharma has actively participated in over 19 national and international seminar, conference, and workshops, has presenting more 45 papers as an eminent resource person, keynote speaker, subject expert, and trainers. He has delivered lecture on research methodology, sample techniques, ICT integration, NEP 2020, pedagogy, assessment, and teacher education at the universities, DIETS and Kendriya Vidyalaya, UGC HRD programs and national workshops across the India. He has completed several faculty development program, orientation programs, refresher course, and short-term courses, including those offered by the university, HNB Gadwal University, CIT NCRT, and Ramanujan College. His research interest focus of emotional intelligence, metacognition, educational technology, teacher education, and higher education. Dr. Sharma served as associate editor and reviewer of 6 international journals. In an article editor of Sage Open Journal, he act of PhD thesis, evaluator and university, and contribution of institutional quality of enhancement of as a IPSC coordinator, NSS officers, member of academic counseling of Sri Dev Suman Uttarakhand University, a lifetime member of All India Association of Education Research, and alumnus of Maharishi Dayanand University, Rohtak. He is widely recognized for his shortly contribution, commitment, and education excellency, and leadership in research, teaching, curriculum development, academic administration. Sir, as a humble token of our
appreciation, we request to esteemed resource person to kindly respect the memento of behalf of Army Institute of Education. I extend a heartfelt welcome to you, sir. To formally welcome all participants and set of context for today's session, I now invited our respected principal, Dr. Abhilasha Gautam ma'am, Army Institute of Education, to deliver to welcome address. Ma'am, please. Thank you, Yogesh sir. Thank you so much for giving such a extensive introduction to our resource person. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मनोज सर इन इटसेल्फ जो आपने बताया है इतना सब कुछ, उसके बियॉन्ड भी उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और सबसे बड़ी अचीवमेंट है ही इज सच ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही इज सच अ वेरी अप्रोचेबल ह्यूमन बीइंग. एनी टाइम you speak to him for any kind of help in research, in education, or any other advice, he is there. So we are really very fortunate to have him among us today. So good morning to our distinguished resource person, respected faculty members, esteemed participants, and dear colleagues. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second day of our students and faculty development program on research methodology and academic publishing. That is being organized by Army Institute of Education, Greater Noida, in association with CTPD India. I am equally grateful to the collaborators of CTPD India, Dr. Sanjay sir. Unfortunately, I was not there yesterday when he was there in the session. So I'm really grateful to sir also for extending support for organizing these kind of events. I sincerely thank each one of you for your enthusiastic participation and active engagement during the inaugural session yesterday. And your insightful questions also, I came to know that the session was very interactive. That shows the commitment of strengthening your research capabilities. Coming to the today's session focuses on the research design and sampling technique, which form the backbone of an scientific investigation. A well-planned research design and an appropriate sampling strategy not only enhances the validity and reliability of research, but also ensure the findings are meaningful and impactful. I am confident that today's expert session will provide practical insight and valuable guidance that you can directly apply to your own research work. I encourage all participants to engage actively, ask questions, and make the most of this learning opportunity. And I reiterate this thing, we all are very fortunate. We all are really very fortunate to have Dr. Manoj sir today with us for this session. And I can vouch you for one thing, that if you will attend today's session attentively, you will never forget what concepts will be clarified in this session today. So my hearty welcome to sir today. Sir, thank you so much for taking out your time, your valuable time for us and joining us for this session. You are welcome, sir. Thank you so much. Thank you, Thank ma'am. you so much. Thank you so much, Abhilasha ma'am. One thing I think Dr. Abhilasha has missed, that we are good friends as well, right? We are friends for the last 20 years, and she is also a very nice person, no doubt. Thank you so much, Yogesh sir. You have really given a very elaborated, my description, but I was not in favor of this कि मेरा इतना बड़ा introduction दिया जाए. Okay, you, it sir. doesn't matter. First of all, I would like to say good morning to everyone, and I'm very much thankful to the AIE who has organized such a wonderful program for the faculty, for the scholars, for the students from the different parts of the different parts of the India. So it is really a nice program, because research methodology and statistics and all these things are very important in the field of research, and we should know about these types of techniques and how we can proceed our research with the appropriate research designing research methods or sampling techniques, or what kind of statistical techniques we should use. So we should know all these things. And
of course, this is a really very good, faculty development program. So I'm thankful to the organizers, CPDP as well, Army Institute of Education, Greater Noida. I'm also thankful to our principal, Dr. Abhilasha Gautam, thankful to Mr. Yogesh Kumar, who is coordinating this event, and all the other persons, those who are associated with this event in the proper organization. There may be some technical team, non-technical team, and of course the participants, those who are from the Army Institution of Education and other parts of the India. So I'm also thankful to all of you, and I'm also thankful to the management and the principal that who has given me the opportunity to deliver my lecture. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. So now I'm going to share my screen, and then we will start that how we can proceed in the sampling process. So just give me 1 minute. I have actually joined through my two devices. One is laptop and one is mobile. Actually, in my laptop, the camera was not working. So that's why I have also joined through mobile phone. So I'm just quitting my video and going to share the presentation. PPT is visible to all? Yes, sir. Okay, thank you. So yesterday, I think you all have discussed about the research, that what is research and what are the different approaches of the research. So after deciding what kind of approach we are using for our research, next step comes that research designing. And research designing is a very important part. It is a kind of, we can say it is a kind of blueprint for the whole research. If your research designing is strong, it means that your whole research program will be a good product at the end. So, in suppose we are going for the research design. First of all, we should know that what is a research. So yesterday you have also learned about the research. That research is basically what? In research we do some kind of, we can say that scientific, it is a scientific process basically in which we try to give something new to the society, something new to the education system, something new to the coming generation. So in research, basically we focus on a systematic process where we use different kind of techniques, we use different kind of methods, we use different kind of sampling designs, sampling techniques, and we use different kinds of tools by which we can collect the sample. We use the different kinds of statistical techniques. These statistical techniques are very vast basically. So you all at this stage are learning very basic basic statistics. But if we will discuss about the statistics is really a very vast topic, and we cannot cover in just a 1 week faculty development program. But we are not going to discuss that what kind of statistics in advanced statistics we have. So these all comes under a research design. Suppose you all are going to construct a house. अगर suppose आप कोई भी अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो उस घर को बनाने से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार करते हैं, और उसी नक्शे के बेसिस पर आपके घर की नींव रखी जाती है, घर की स्ट्रक्चर तैयार होती है, और फिर उसके बाद फाइनली आपको एक ब्यूटीफुल हाउस तैयार होकर मिलता है. इन द सेम वे, if suppose we are doing research, first of all we should know what kind of components we have to involve in the research design. And research design is nothing, it is just a kind of blueprint in which you are describing, not elaborating, describing all the components in brief, that what kind of methods you are using, what sampling techniques you are using, what stats you are using. All these things you generally put in the research design. So if we will discuss, I will not take the research design process in very detail, because yesterday you have also learned about some of the approaches of the research process, that what approaches you should
use in doing your research. So I will not discuss all these things in detail, but we will discuss sampling techniques in detail. So I will just briefly give you that what generally in research design comes. Research design process basically have these 9 steps, in which the first step comes, that is defining of the research problem. Of course, when you are doing some kind of research, first of all, you have to define the research problem, that on which topic you are going to do your research. And your research problem defines in itself that what is the quality of your research. So it is the most important part of your research design, that your research problem should be very we can say very measurable. It should be appropriate according to your research, or it should be beneficial for the all. So research in research designing, the first step, research problem, is the most crucial part, because we have seen most of the time the students, those who are preparing this research synopsis, and then they're presenting in their DRC and or some other meetings, then we have seen that most of the time they are changing the research problem, the title of the research problem, because sometimes they have missed something, some variables are missing, or sometimes they have some a missing word or something else. It may be many things in the research problem. But suppose if you have prepared your research problem very accurately, very effectively, then it gives the entire picture of your research design. So it is the most important part, that your research problem should be appropriate. Then it comes the assess the value of the information. In the assessment of the value of information, basically we study that why you are taking your research, then how you will how you'll get the benefit of this research for you, and for the society as well, and for the educationalists or for the government as well. So it generally defines the value of your research, that how your research is important for the others. Then generally we have the next step, to select the approach for the data collection. In yesterday also, you have studied some of the approaches of the research process. So you have to select the appropriate research approach as well, that what kind of research approach you have. You have descriptive research, exploratory research, or you have cause and effect approach, kind of approach in research. So you have to identify the accurate approach as well. Then you have to select the measurement techniques. In measurement techniques, we have also studied about the different kind of measuring scales. So we have different 4 to 5 of measuring. Okay, I have my screen has some kind of blur, or it is visible clearly to all. Sir, it's blurry actually. Okay, this slide was also has some kind of blur. सर It is लाइट okay. लाइट बहुत लाइट हो जा रहा है, बहुत ब्लर रीडेबल नहीं आ रहा है, Okay. हल्का सा ब्लर आ रहा है. All the slides have blur. Yes sir. Yes, sir. Okay, just wait a minute. Yes, sir. Okay. Is it also have some kind of blur? Yes sir, अभी वही है, Yes, sir. स्क्रीन में थोड़ा ब्लर चल रहा है सर. एक बार सर आप दोबारा ना शेयरिंग कर प्रेजेंट स्टॉप शेयरिंग करके बाद हाँ दोबारा करिए सर, एक बार स्क्रीन शेयर. Okay, just wait for a minute.
Is it okay now? No, sir. Not yet. But it's still the same. मनोज सर आप हमें शेयर कर दीजिए स्क्रीन एंड वील ट्राई हाँ नाउ इट लुक्स फाइन If it is okay, then we can proceed. Otherwise, I will share my PPT to Yogesh sir, then he can run from there. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yogesh sir, just give me your email ID. I'm just sending the PPTs to you. Okay. जी, yes, sir. Yes. খাতা চেকিং শেষ স্যার এই সেমিস্টারের জন্য आई एम शेयरिंग सर Okay, I'm going to send the PPTs to Yogesh sir, and Yogesh sir will run from there. Then we will start. Okay. I have mailed you the PPTs, Yogesh sir. Have you received the PPTs, Yogesh sir? Sir, I check कर रहा हूँ sir. Okay, okay. Actually, it is heavily raining in Uttarakhand. There might be some kind of internet error or some kind of other technical issue. अभी रिसीव नहीं हुई है सर. सर आई Uh, नहीं है, अभी रिसीव नहीं हुई है मेल. अभी रिसीव नहीं हुई है.
Yes, Yogesh sir. Now kindly check. Yes, sir. I received, sir. Okay, thank you. सर एक सैंपल की है और एक रिसर्च डिजाइनिंग, आप पहले रिसर्च डिजाइनिंग हाँ, प्रोसेस research- की। जी जी, पहले रिसर्च डिजाइनिंग को आप ओपन कर दीजिए। सर शेयर हो रही है स्क्रीन। यस यस योगेश जी। Yes, sir जी। क्लियर है स्क्रीन। It's better, sir. It's better, sir. You can make it full screen. सर क्लियर सर। Okay, fine. Thank you. Thank you, USG. And sorry for this interruption. I have given you extra task, Yogesh sir. Now you have to, move these slides and then I will present. Okay, next. We were on the steps. Next. Okay, thank you. So we were discussing the different measurement techniques. So in measurement techniques, basically, we have different measuring scales. So all these 4 scales you have also studied in your B.Ed, or you will study in your M.Ed, M.Phil, PhD, everywhere you will study. So we have to define your measuring techniques as well, that which kind of scale basically we are using. Then next part is the sample selection. Sample selection, as I told you, that it is the most crucial part of your research, and your sample selection depends on your research problem, that what kind of variables you have taken in your research, how many variables you have taken, and what are the nature of these variables. These all will define the sample selection, that which kind of sampling technique you should use. So we will discuss this sample selection today in detail. Then you have this, next step is select the model of the analysis. That suppose you have once you have collected all the samples, you have collected all the data, then after collecting the data, that how you will analyze your data. So for the analysis of the data, you have to prepare a kind of model, or you have to prepare another design basically, in which you will define your research statistical techniques, that what kind of stats you will use for analyzing your sampling data you have collected. Then you have evaluate the ethics of the research. It is the most important part of, again, we can say that the most important part, ethics of the research. Most of the time we have seen that I shouldn't mention this thing, that what the students basically doing, they are, to some extent, it is now very much, we have given a kind of stop on this through plagiarism. We should have some ethics in the research. That ethics means that it should be original. It should have accountability by the researcher, that what kind of research he has done with his own.
But many universities or many colleges or many students, I have seen that they are not giving a particular ethics to their research. They are just copying and pasting some content or data from here to there. And sometimes they are also giving their work to some other person that kindly do my research, then I will pay you something for that. But these kind of things shouldn't be there, because ethics of the research doesn't allow such kind of things. Ethics means that your research should be original and you should be completely accountable for your research, and it should be plagiarism free. So in our research, ethics part is very, very important. Then estimate time and financial requirement. Of course, in the beginning also we make a planning for this, that what kind of time we are going to take in completion of our research and how much finance will be consumed in completion of my research. So you also plan for this, but you are not going to mention your time and financial things in your complete thesis, but of course you plan for your time and management. Then finally, after doing all this planning, you prepare a research proposal. So in a research design, we have these 9 steps, and these 9 steps basically ends at only the synopsis. It is not a thesis, because in research designing, we are giving a kind of planning that what we are going to do. It is a kind of blueprint where your complete, a miniature form of your all thesis will reflect in your research proposal or your synopsis, which you are going to prepare, or some of you might have prepared as well. So you have to follow these 9 steps. Next slide. Now the classification of the research designing. Yesterday you have also discussed what kind of approaches we generally use. In research, we generally use 3 major types of approaches. One is exploratory design, and another one is descriptive research, and third one is causal research. So this descriptive and causal, it comes under conclusive research. So basically, we have 2 major categories for this. One is exploratory design, another one is conclusive research. Conclusive is further divided into 2 major parts: descriptive research and the causal relation. So these are the basically approaches or methods of your research approach, that what kind of research you are going to take. So I will not discuss this in detail because you have already done this part yesterday, but we should know what kind of research we are going to do. So what we will do in these 3 researches, or what we should keep in mind in these 3 researches: exploratory design and descriptive design and causal design. So next slide. Next. Okay, the types of research design, as I told you, that we have 3 major types of research design: exploratory research design, and descriptive research design, and the last one is causal research design. As I told you, these are the 3 major classifications of your research design in which you will prepare your synopsis. Exploratory is, we can say that I will tell you more about this, but exploratory is basically a kind of research where you are not going to have a sample technique, or you are going to have the major sample. But in descriptive and experimental research design, the major part of sampling, has very important. So exploratory, what exploratory is, I will again saying that I'm not going to take this in a detailed process because you have already learned, but in a brief, I will tell that what is this exploratory and descriptive and experimental designs are. So next slide. This exploratory research design, suppose if your synopsis is based, or your research is based on exploratory research design or exploratory research approach you have taken, then you will going to make a research design which is exploratory. It basically aims to get a better understanding of the problem by explaining the concept and developing hypotheses regarding the research study. Various techniques used in exploratory research study are literature surveys, focus group, case studies, etc. Exploratory research doesn't emphasize upon the sampling. As I told you that it doesn't much emphasize on your sampling techniques. Basically, in exploratory research design, we have table, chair, pen, copy. These things are very much important for this research, and you can do your exploratory research without
taking sample. So in this research, the most important part is that how you can explain about your research. For example, suppose you want to describe what is the contribution of Mahatma Gandhi in our education system. So this kind of research can be taken into exploratory research design, where there is no need of taking sampling, but you will study what kind of contribution they have given in our education system through some primary or secondary sources. You will study the material given by him in education. So on the basis of that material, you will finally submit your thesis. So these kind of research basically doesn't need a sampling, but tries to gather information from the participants who are considered knowledgeable. So as I told you that we, of course, get the information through some participants, means we can get the information through people as well. We can get the information through some books, newspapers, some documentaries as well. So we may have different kind of items for this data collection in exploratory research, but there is no need of taking a sample. Next. In descriptive research, as I told you, in descriptive and the causal relationship researches, we have a very basic need of sample. Unlike exploratory research, the aim of descriptive research is to describe the characteristics of a phenomena is more rigid than exploratory research. It describes various aspects related to the population. It is study. It is the study that is designed to depict the population in much more accurate way. So as I told you that we have to take a sample. So sample is of course related with the population, because from population we will take the sample. So it attempts to describe, explain, and interpret the conditions in much detailed approach. It examines a phenomena that is occurring at a specific place and at specific time. Next is. Next is experimental and the causal research design. Yes, this is the most important. What I should feel that experimental and causal relationships, the most, we can say scientific kind of research. If suppose we are doing some kind of experiments, or we are studying the cause and effect relationship between variables may be one, two, more, multiple variables. So these kind of research are generally giving some, fruitful or giving very better results. But in this kind of technique, you need variables, you need sample, you need some kind of stats techniques. So you have to define all these three in measure if you are taking experimental or causal research design. Next is, thank you for this thing. This was all about, a research design. Suppose if you are taking your research experimental, then what kind of, we can say components you will take. If you are taking descriptive research, then what kind of components you are going to take. Then if you are taking exploratory research, then you should know that what kind of components you are going to add in that research. All these three research are important, but basically if you will say that more scientific are which one, then descriptive and experimental are the more scientific and more elaborative researches, where the researcher role is very, very important. I think someone mic is on. Okay, next now we are going to discuss about the sampling technique. So it is, as I told you, that very, very important. But the students basically, they do not understand that what kind of sampling technique we should use. So if we have to use an appropriate sampling technique, then we should know that what are the variables in our research problem there. So if you know the variables, that dependent variable or independent variable or extraneous variable, controlled variable, if you know everything about the variables, then it will be very easy for you to take an appropriate sampling technique. But if you are not, able to understand that what kind of, variables you are having in your main research problem, then it is not easy to take a sampling technique, an appropriate sampling technique. So now we are going to discuss about sampling techniques. So if we are going to discuss about the sampling techniques, first of all, we should know that what kind of learning objectives you will achieve after, discussing this sampling technique. So you will able to know about that why sampling is required, what is the rule of, sampling is there in your research.
Next you will learn that to develop an understanding about the various sampling techniques, that what are the various sampling techniques and which one is better for your research. So you will also understand that what kind of research technique you should use. To differentiate between the probability and non-probability sampling, of course, you know that we have two major different types of sampling techniques. One is probability and another one is non-probability technique. So what these techniques are, probability and non-probability, how you will select the sample from these. So we will discuss about these things. And last learning objective is to discuss the relative advantages and the disadvantages of your sampling techniques. That this kind of, suppose you have taken the quota sampling, suppose you have taken the stratified sampling, then you should know that what are the disadvantages, why you are using this sampling, and what are the disadvantages of taking this sampling. Because when you are taking your sample, you have to delimit your sample as well, कि आपको कितना सैंपल चाहिए, कहाँ से चाहिए, और किस तरह का आपको सैंपल चाहिए. तो you have delimitation everywhere. And whenever you are using your stats, of course, there is always a chance of errors as well, because the data, the sampling we are getting, it is not necessary. Suppose if we have taken a sample from a particular population and we have applied a test on that, and we have scored. So suppose today we have scored 60 to 70%. After a few days, or after not just a few days, few months, or maybe, or after few we can say few hours, if you suppose again apply a same test on the same population but not the same sample, you may get the different result as well. So we have always some kind of errors in sampling as well, but we can minimize the sample. There are various ways that how we can minimize this sample, but uh, minimizing is not the criteria that you can minimize your sampling error. There are various statistical techniques through which also you can minimize your errors and you can get more accurate result. Next slide. Next slide, Yogesh. Okay. So in the previous slide also, in the previous, when we were discussing about the research design, I told you that research is basically a scientific. I have, there is a definition which is given by the Curling in 1986. He started his definition from a scientific research. Now you must be thinking that why we are discussing about the scientific, research. We are not studying about science. We are doing B.Ed, M.Ed, M.Phil, or PhD, or we are also the teacher. Some of the faculties are also sitting there. So scientific research doesn't mean that it is directly related with the science. Scientific means the research which is systematic, the research which is controlled, the research which has a process, which has a systematic process. So scientific research, all the researches, whatever we are doing, whether it is humanities, commerce, or in the field of science, all the researches are scientific because they have certain kind of process, they have certain system, they have some variables controlled, they have empirical, they have data, everything they have. So everything is planned. So whenever we have everything is systematized and planned, it is a scientific research. So research is an organized and systematic way of finding answers to the questions. Because whenever you are planning your synopsis, you are going to plan to make your synopsis, you always have certain kind of objectives, you have certain kind of questions, you have certain kind of hypothesis. So all these are basically some kind of questions for which you are going to answer. So that is the main meaning of the research. Next slide. Important components of the empirical research. Now, again, in the heading you have seen, I have pointed out the word empirical research. Empirical research are basically, that it is elaborative, descriptive. Basically, second, I told you about your experimental researches, where your experiences, your primary role is very important in the empirical researches, because empirical researches are more, we can say the advanced than exploratory research. So what are the components in the empirical research? Problem statement, research question, purpose, all these things we have also discussed in the research design as well, but there are some different, things as well. We will also describe about the theories, assumption, background literatures. We also study the what kind of already work has been done, research you have taken in that field. So you always study some kind of literature, variables and hypotheses. As I told you, if whatever topic you're taking, variables
are very, very important. These variables sets the platform for making particular objectives and hypotheses. So I'm again saying that you must know the variables. So variables are the most important part of any kind of research. Then you also define the operational definition or operational terms, whatever you have taken in your problem, and then research design, methodology, instrument, sampling, data analysis, conclusion, interpretation, recommendation. All these things comes under your research. Next slide. Okay, now we are directly moving on the sampling. What is basically sampling? I think total we have more than 100 participants have joined here, and each and every participant has done sampling in their life. हर पार्टिसिपेंट ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सैम्पलिंग का यूज किया है. इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, अगर हम रिसर्च की बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सैम्पलिंग हमारे पास होती ही नहीं है. वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द टर्म सैम्पलिंग. हाउ वी आर डीलिंग? सपोज वी आर गोइंग टू मार्केट and you are purchasing some kind of vegetables, some kind of fruits, or some kind of pulses, grains, and all these things. So you are always taking a piece from there, or you are taking a small amount of that particular item, and then you are deciding that whether this item is good or not, right? सपोज आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सपोज सिंपल सा टमाटोस आपको खरीदने हैं, तो टमाटोस को आप देख ऊपर से एक बार देख लेते हैं, लेकिन देखने के बाद आप उसे छू करके देखते हैं, और एक दो पीस सिर्फ छू करके देखते हैं, उनको थोड़ा प्रेस करके देखते हैं. इफ यू आर थिंकिंग दैट द क्वालिटी ऑफ दिस टमाटोस आर गुड, then of course you are going to take that tomatoes from particular population of all the tomatoes. So previous slide please. We are on the sampling. Yes. Okay, so sampling is a term which is associated with each and every individual, whether he is doing research or not. आप कुछ भी कीजिए, आप सैम्पलिंग से अपने आप को दूर कर ही नहीं सकते. जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो हमेशा एक सैंपल को ट्राई करते हैं. सैंपल के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि बाकी चीजें उसके अंदर कैसी हो सकती हैं. आप मार्केट में जाते हैं, सपोज चावल खरीदते हैं, ठीक है, या आपने कोई और इस तरह के ग्रेन्स आपने खरीदने हैं, तो आप उनको एक मुट्ठी में हाथ में लेते हैं और उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि हाँ, इनकी क्वालिटी कैसी है. इफ यू आर थिंकिंग दैट द क्वालिटी इज गुड, of course you are going to purchase that thing from there. So it means that you have taken the sample. So sample जो है वो बहुत ही एक ऐसा टर्म है जो कि हमारी लाइफ में, whether we are doing research or we are not doing research, it is always associated with us, like mathematics. जैसे हम सभी के साथ मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है, चाहे कोई मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो या ना हो, या कोई फैकल्टी भी हो या ना हो, मैथमेटिक्स भी एक ऐसा टर्म है आपके पास, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है which is always associated with each and every individual. So in the same way, the sampling is also associated with each and every person. So if we will define that sampling, that what sampling is, a sample is a smaller, but hopefully the representative, means whatever you're taking as a sample, it will represent the whole. So collection of the units from a population used to determine truths about that population. It was given by Phil in 2005. A sample is a miniature picture of the entire group from which it has been taken. In other words, it can be called as a small representation of a large whole. The entire group from which the sample has been taken is known as the population. आप हमेशा जब भी सैंपल को लेते हैं तो उसे एक पॉपुलेशन से लिया जाता है, यानी कि आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन होगी, उससे आप कुछ लोगों को, कुछ आइटम्स को, कुछ क्वांटिटी को ले लेते हैं और अपनी स्टडी उसके ऊपर करते हैं. बट दैट सैंपल विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. जहां से भी आपने उसको लिया है वो उस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, नेक्स्ट. यस, सैम्पलिंग. व्हाट इज योर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? पॉपुलेशन में क्या हो सकता है? पॉपुलेशन अभी जैसे मैंने भी आपको बताया, कुछ भी हो सकता है. ऑल द स्टूडेंट्स may be a part of population, all the teachers may be a part of population, all the school colleges, these may represent the population. Region, country, state, districts, these all may represent the population. A particular age group, a particular sex, a particular gender, a particular height, anything can represent the sample. So sample जो भी आपका होगा वो आपके उस टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि आपने टॉपिक क्या लिया हुआ है, उस टॉपिक में वेरिएबल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग
हमारे पास टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उनके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट जनरली हम जो एजुकेशन की फील्ड में रिसर्चेस करते हैं वहाँ ज्यादातर टीचर्स स्टूडेंट्स इनका रोल ज्यादा रहता है, हम सैम्पलिंग वहीं से चूज करने की कोशिश करते हैं, बट इट मे बी other than teachers and students as well. Next slide. Sampling, okay, previous slide. There are three major factors that influence the sample representativeness, that sampling procedure. आपको कहना कि whatever sample you have taken from the population, that must be the representative of the population. तो इसके लिए तीन factors ज़्यादा important role play करते हैं. First is sampling procedure. What kind of process you have chosen for the sample? What is the sample size? And the participants or the responses what they are giving to you. So these three factors are important factors for representing the whole population, right? If you have taken these three accurately, it means there will be a very minimum chances of having some errors. So when might you sample be entire the population? कब आपका entire population sample को represent करता है? When your population is very small. अब देखिए अगर आपके पास population is small है, suppose you are having a very few number of people in the population and you are taking a large sample from that. Suppose you are having only 100 people in a population and you are taking 90 out of these 100 as a sample. So it means that you have the complete representation of the whole population. So these are the basically we can say these are the main points which gives the entire population, which will represent the entire population. But suppose if you are having 10,000 number of people in a population and you are taking only 100 or 50 from that population, it means that might not represent the entire population, or there may be sampling error. There may be chances of having more sampling error in that case. So if you have small sample, if you have small population, then there are chances that it will represent the whole population. When you have extensive resources, of course, second part is when you have different, major resources, then also you can use your sample can use represent the entire population. When you do not expect a very high response, okay, जब आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाले हैं, तब भी कई बार आप लोग कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो जिनसे आपको एक उम्मीद होती है कि हाँ ये हमें एक पूरा रिस्पॉन्स दे देंगे. बट जनरली क्या होता है कि जब सपोज आप लोग भी कभी रिसर्च को आगे प्रोसीड करेंगे या कर चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर जब आप कोई भी क्वेश्चनियर एक सैंपल पर अप्लाई करते हैं तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको उनके रिस्पॉन्सेस कंप्लीटली मिल जाए. और जब हमें उनके रिस्पॉन्सेस कंप्लीटली नहीं मिल पाते हैं या बहुत से स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. तो इसलिए हमारे पास ऐसा सोर्स होना चाहिए कि हमें ये लगे कि हाँ this sample will give you a complete response. तो अगर आपको कहीं से complete response मिल जाते हैं तो ऐसे sample उस पूरी population को represent कर सकते हैं. So when you have uniqueness, if suppose you have uniqueness in your sample, then again you have chances of getting representing that sample as a whole population. The what is uniqueness is if your sample is homogeneous, that represent the uniqueness. अगर आपका sample homogeneous nature को show करता है तो it means that there are chances that you will represent your sample will represent the whole population. But अगर आपका heterogeneous group होता है तो there are chances that you will get a distorted form of data, and that data may not give you your desired result. So it is important if your data is having uniqueness in nature, that will represent your whole population. And the last is when you have limited resources, as we have discussed one point, extensive resources and limited resources. दोनों cases में ही आपका entire population represent कर सकता है, but it depends that how you are using these extensive and limited resources in your research. Next slide. I will just skip this slide because जो भी कुछ इस slide के अंदर है वो generally ये पूरी population से किस तरीके से आप एक sample को choose करते हैं उसके बारे में बताया गया है. तो we are not going to discuss this in detail because we have already discussed that how you will choose the sample
from the population. Next move. Okay, as I told you, the population is very important. So first of all, you always decide the population, that what population you are going to choose, and out of that population, choose some kind of target population, because the population which you have in measure in front of you, you are not going to take the whole population. Identify the target population, that this is the target population which is useful for your study, and then you will cut short the whole population into a different kind of population, that is known as target population. There now, from target population, you generally choose your the target population is measure one, then you use the study population. Study means that whatever variables you have, you just choose the population according to your variables. So once you have taken the target population, once you have taken your study population, then it is easy for you to have or to choose the sample. But majorly what I have seen, that most of the students or most of the researchers, they are not targeting the population. They are not focusing on the population as per their variables. They are just taking the population, that yes, this is the population and I will take the sample from that. They are not defining the target population and study population. So most of the students, they are just describing population and sample. But we also make a design about the population. In population, target population and study population, we should elaborate, we should bifurcate these two terms, and then finally we should move towards the sample. Then only we can get the accurate sample and accurate data. Next. What population is. So we all know that what is a population. A population basically consists of persons, objects, attributes, qualities, behavior of the people, answers of the various items, tests, cities, families, countries. There are many more things. All comes under the population. But it defines in your research problem that what should be the population for you. Suppose you are doing your research in the research which is related to some political leaders, right? If suppose you're doing your research in politics or political education. So in politics, suppose you are doing your research, then your population will be only the politicians or the people, those who are associated with the politics. Then you cannot take the population from doctors or from other communities. Then it means that whatever title, whatever topic you have, that will define the population for you, and that will define the target population for you, that will define the study population for you, and that then you will get the sample from that. As I told you that suppose you are doing your research in the field of this politics, so you have numbers of politicians that will represent your target population. All the politicians, that those who are present in our country, it means that that will represent your target population. But your all the politician will not be a part of that. Then you will define that what kind of study population is important. Means out of these politicians, you are taking MPs, you are taking MLAs, or you are taking some kind of Gram Pradhan or some kind of other Parshad and all these things. So it depends on your nature of your study, that what kind of research you are doing. So out of this target population, again you are focusing on your study population, and then after the study population, defining the study population, then you are taking the sample from that. Now then, how you are getting the sample, this will give you through different sampling techniques, that how you can get the sample from different politicians from there. So population, the population may be of anything. It may be people, it may be living things, it may be non-living things, it may be anything. So I will not discuss more about the population, because population you all know. Next slide. Okay, move. Yes. As I told you that in population, these two terms are very much important: heterogeneous population and homogeneous population. In heterogeneous population, in a population, we have, the people having different attributes. So in population, we have heterogeneity all the time. But in from this population, if we are
choosing the study population. That study population will represent whether it has homogeneity or not. Because population, most of the time, if we're talking about the population is always heterogeneity. Because in the population, we have different natures of people, we have different, caste, we have different age, we have different geographical conditions, we have different backgrounds, economic standards, we have different education background. So there might be, we have different jobs and everything. So population always have heterogeneity, but we have to find out that whether we have to make it in a homogeneous population or we can take the sample from the heterogeneous population. It will give you the answer from your statement of the problem. Next. Sampling. Sampling nature and purpose. Sample comprises of the a small proportion of the individuals or the items of the study from a larger group, that is known as population. The number of respondents or the subjects included in the sample is called the sample size. These all terms are very much important if you are making a research design, that what is sample size, what is parameter, what is sampling unit, what is sampling design. You all should know that what these terms are. So first term is the sample size. The number of respondents or the subjects included in the sample is known as the sample size. Second is what is parameter? A measured value based on the data collected from a sample is known as statistics, and a population value inferred from the statistics is known as the parameter. This is the second term which you should know. Then we have sampling unit, a fundamental unit or group of units included in a sample is known as sampling unit. It may be any individual or it may be a group of the individuals. So sampling unit should you should know. Then we have a sampling frame, a list of containing all the sampling units, whatever some sampling units you have. Suppose you have 1, 2, 3, 4, or many more. It all depends on your variables you have taken. So sampling units, all the sampling units will representing the sampling frame. And the last is sampling design, a design giving the specification of the all these terms is known as sampling design. So sampling is not just a step, it is in itself a complete chapter in which you have to define your population, sample size, statistics, parameters, sampling units, sampling frame. All these things should reflect in your synopsis that how you are taking your sample. But most of the time, I have also seen that so students are not describing all these things, that how you have taken your sample. They are just giving that this is the sampling technique, and through this sampling technique, you have used this much number of individuals from that particular population. So this is not just the sampling design. Sampling design in itself very elaborative, but elaboration, it doesn't mean that elaboration should be very high. Elaboration means that in brief, you have to define your sample size, parameters, sampling units, sampling frames. These things you should define. And of course, the population. Next. Next slide. Yes. Purpose of sampling. We know basically these things, so I will not elaborate. I will just read out all these points. To save the time and for the data collection, to reduce the cost of the data collection and processing, to reduce the possibility of non-sampling errors by increasing accuracy of the results. Then we have to enable the researchers to conduct thorough and in-depth investigation and to use as the only alternative where complete coverage of the population is not possible. So purpose of the population is very clear that through sample, you are going to take the data, and data you are going to analyze. And the most important thing, the accuracy in your data. Sampling is important for getting accurate results, original results, not just the manipulative results. Of course, the statistics doesn't give you 100% accuracy, but most of the time you will try for getting the accuracy. So sampling is the only way which gives you the accuracy, originality in your research. Next is characteristics of a good sample. Of course, it should be representative, it should be adequacy. Representativeness we have already discussed, but in adequacy, an adequate sample is one that is of a sufficient size to allow the
confidence in the stability of its characteristic, that is to contain the enough number of cases to ensure the reliable result. Most of the time, I have also seen that students are coming to me and they are asking that, sir, what should be the sample size for our research? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत वास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर कोई एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। जनरली हम ये कह देते हैं ठीक है आप 200 सैंपल ले लीजिए, 400 सैंपल ले लीजिए, 500 सैंपल ले लीजिए, बट हम किस बेस को आधार मान करके ये कह रहे हैं कि इतना सैंपल आपके लिए एक्यूरेट रहेगा? ये बात भी डिपेंड करती है कि आपका टॉपिक क्या है, थीम क्या है, उसमें वेरिएबल्स कैसे हैं। Suppose you have taken the variables, those who are related, as we have just discussed, that we are doing some kind of research on political education. We are dealing with some politicians. So we know that the politicians are limited. अगर हम एमपीस की बात करें, एमएलएस की बात करें, तो उनकी संख्या लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड में से भी आपको सैंपल लेना है तो आप उनसे ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक में वेरिएबल्स कैसे हैं, आपने कैसे वेरिएबल्स लिए हैं। दिस विल ऑल गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एडिक्वेसी कि आपके पास सैंपल साइज क्या होना चाहिए। बट हम एक स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं कि कुछ रिसर्चेस के अंदर कि जहां पर सैंपल इजीली नहीं मिल पाता, पॉपुलेशन इजीली नहीं मिल पाती, तो हम ये मान के चलते हैं कि 30 जो आपका एक मिनिमम है वो सैंपल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। बट 30 एक कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है कि आपने हर तरह के रिसर्चेस के लिए 30 मान करके चल लिया है। वो 30 किस तरह के रिसर्चेस में है, कहाँ आपको 30 लेना चाहिए। मोस्टली जो रिसर्चेस हम लोग लेते हैं वहां ज्यादातर 30 से ऊपर आपको मिलता है, बट जहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है तब हम इसको कम कर सकते हैं। तो इसका कोई एक ऐसा एक्यूरेट आंसर नहीं है कि आपका पॉपुलेशन, आपका जो सैंपल है वो कितना होना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर, आपके टॉपिक पर, आपके वेरिएबल्स पर कि आपके सैंपल साइज को कितना होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, now we are discussing about the types of samples. So now, till now, we have discussed that why sampling is important, how this sample is directly connected with your variables, with your, topic, themes, with your approach which you have taken for your research. So all these things will, decide that what kind of sample you should take. So if you will discuss broadly, the samples are categorized into two parts. One is probability sampling, and probability is generally a kind of random sampling. Second is non-probability sampling. So in probability sampling, what we have in probability sampling, whatever size of the population is, each and every person has equal number of chances to be selected. अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो आपके पास चाहे सैंपल साइज पॉपुलेशन कितनी ही हो, सपोज 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो जितने भी लोग उस पॉपुलेशन में हैं, ईच एंड एवरी वन हैज द इक्वल नंबर ऑफ चांसेस टू बी सेलेक्टेड फॉर योर सैंपल। हर किसी के पास एक समान अनुपात में एक नंबर होता है कि उसके पास इतने चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। And this probability sampling, we can say that mostly generally we use the probability sampling, but there are various researches where non-probability samplings are also very important, where the population is not easily targeted. So because we know that the resources in the population are limited, though generally we use the non-probability sampling, but majorly we use the probability sampling. In probability sampling, there is always equal chances of every item or every person or every thing has to be selected. So in probability sampling, we have these different kinds of sampling. This is the simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, multi-phase sampling. So we have many probability samplings. There are other as well, but generally we use these sampling techniques, and mostly we generally use the simple random systematic random sampling. But if suppose your variables are very wide and they have the different stratas, or they have the different they have the different kind of, we can say, population, then we move toward the stratified and cluster sampling as well.
We are also using the multi-stage and multi-phase sampling as well. These are also used by some of the researchers, but the number of researchers are not very large, those who are using multi-stage and multi-phase sampling, but of course, these are also using. And second is non-probability sampling. Non-probability sampling, as the name suggests, in probability sampling, there is equal number of chances to be selected by each and every individual. But in non-probability sampling, there is no equal chances of every person or items to be selected. So in non-probability sampling, we generally do with our own convenience, with you can say the purpose of research. Suppose we have particular this purpose, so we generally keep the purpose in our mind and we generally use the non-probability sampling. So this may be taken from different approaches like convenience sampling, accidental sampling, purposive sampling, quota sampling. There may be other types as well, but generally we use these 4 or 5 types of sampling technique in non-probability. Most of the researchers, they are using non-probability sampling in their sampling techniques. If suppose they are using simple random sampling as well, in that sampling also they are trying to use the non-probability of sampling. But this these two sampling, probability and non-probability, they shouldn't merge these two. They should either use probability or non-probability. But sometimes it also depends on your variables. Suppose in your research, the variables, the variables you have taken, they have very less population, you may move towards a non-probability sampling as well. I just want to say that in a single research or in a single, your research, your thesis, dissertation, or synopsis, you can use probability as well as non-probability, both the techniques. But again, I am saying it is directly depending on your variables which you have taken or the topics which you have taken. But I will suggest that you should stick either on probability or non-probability sampling. You should choose one and you should proceed your research as per your own research thesis, the research topic, or the variables you have. You shouldn't try to mix, but we can mix, right? Next slide is. What is the process that how you can take the sample? The sampling process comprises the several stages defining the population of the concern. As I told you that before choosing the sample, first of all, you should define your population. What is your target population? What is your study population? And then you may have different status in your population as well. So you should always define your population, specifying the sampling frame, a set of items or events possible to measure, specifying a sampling technique for selecting the items, events for the frame, determining the sample size, implementing the sampling plan, sampling and data collecting, and review the whole sampling process. You should review the whole sampling process, whether you have done it in a correct way, or if you think that you have did some kind of mistake somewhere, then you should repeat it, or you should try to overcome your mistake, and so that you can get the desired results. Next is. Next slide. Okay, probability sampling. As I told you that it has the equal number of chances by every item or individual, those who are associated with that population. Next slide. In probability sampling, we discussed that these are the probability sampling techniques which we should use. Now we are taking one by one these techniques, that how we can take the sample from these. Next. Okay, next. Next. Because we have discussed all these things. Okay. Now it is a simple random sampling. First, as we know that this is the most commonly used, statistical technique, sampling technique used by the researcher. Simple random sampling. In simple random sampling, what we are having applicable when the population is small, homogeneous, and readily available. So generally it is used when the population is small, homogeneity, and readily available. All subsets of the frames are given an equal probability. Each element of the frame thus has an equal probability of selection. It provides for greatest number of possible samples. This is done by assigning a number to each unit in the sampling frame. And the table of random numbers, lottery system,
or throwing out a kind of slip to determine the sample size to be selected. Generally random sampling में क्या होता है कि आपने एक पॉपुलेशन को चूज कर लिया और वो पॉपुलेशन आपके पास एक होमोजीनियस पॉपुलेशन है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ले रहे हैं, अगर हमारे पास एरर के चांसेस हमें कम करने हैं तो होमोजेनिटी का होना जरूरी है। और होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी दोनों चीजें अपनी जगह एप्लीकेबल हैं, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपकी थीम क्या है और वेरिएबल्स क्या है, आपका टॉपिक क्या है। तो दोनों चीजें यूजफुल हो सकती हैं, बट होमोजेनिटी होगी तो यू विल गेट मच मोर रिलायबल रिजल्ट्स। तो जनरली रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, सपोज आपके पास 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उन 100 में से आप लोगों को 50 लोग चाहिए या 10 लोग चाहिए या 20 लोग चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, कोई भी एक लॉटरी सिस्टम को आप अपना सकते हैं। किसी भी आपने उन 100 लोगों के नाम को कहीं पर भी एक स्लिप में रखा है और उस स्लिप में से कोई भी आप 10 20 50 अपने सैंपल के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। तो जिनका भी नाम आपके सामने आता है, या कंप्यूटर से भी आजकल हम उन सबको नेम दे करके कंप्यूटर से भी एक डाटा इस तरीके का निकालते हैं कि भाई किसके चांसेस सेलेक्ट होने के ज्यादा हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट टेक्निक एज वेल। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है कि जो भी एक सैंपल है आपके पास, जो भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति के पास सेम नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि भाई मेरा भी नंबर आ सकता है। तो सैंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट यू हैव टू डिफाइन योर पॉपुलेशन दैट दिस इज द पॉपुलेशन। Suppose you have 100 people and out of this 100 you have to take only 10. So just put only 10, just only take out the 10 slips or the 10 people's name from that particular population for your sample. So ये बहुत easy है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड को लगाने की जरूरत नहीं होती है। रैंडम सैंपलिंग में आप रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज आप कोई लॉटरी सिस्टम भी यूज नहीं करते हो, सपोज आपने कोई कंप्यूटर से भी शफलिंग सिस्टम यूज नहीं किया है, सपोज आपने कोई और एक पर्टिकुलर रैंडम नंबर भी उनको नहीं दिया है, तो आप उन 100 लोगों में से किसी भी 10 लोगों को जाकर के भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि होमोजेनिटी है। If there is homogeneity, it means that you will get the result, you will get the data most accurately, and that will represent the whole population as well. So random sampling techniques is one of the simplest technique, and mostly we use the random sampling in our research thesis or dissertation. Next is. Now we will move a little bit faster because we have to take some questions as well, and it is already 11:30. So we will just speed up some next points. Okay, simple random sampling. Okay, I'm just skipping this one. Oh, wait. We will discuss some disadvantages of this random sampling. Whatever sampling technique we have chosen, it has some advantages and it has some disadvantages as well. But the sample technique which you will choose, it will directly depend on your variables and the topic, the research problem you have taken. So for you, there will be no disadvantages because you know that this is the right technique you have chosen and this will give you the accurate result. But it has some disadvantages, like if sampling frame is large, then this method is impracticable. कि कई बार जब sampling size बहुत ज़्यादा large हो जाता है, तब हम कई बार इस method को use नहीं कर पाते हैं, या ये बहुत ज़्यादा time आपका consume कर सकता है. Minority subgroups of the interest in population may not be present in sample in sufficient numbers for the study. Minority subgroup for the interest, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ generally क्या होता है, homogeneity को हम focus करते हैं. जब भी कभी भी रैंडम सैंपलिंग का आप यूज करें तो आप लोगों को होमोजेनिटी का ध्यान रखना है कि वो एक होमोजेनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हम उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट है या उनके अंदर सब ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि माइनॉरिटी में हो, उनको हम इग्नोर करते हैं, उन चीजों को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम जनरली होमोजेनिटी जो बनाते हैं वो पर्टिकुलर एक उनके कॉमन फैक्टर को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और हम उसी को पॉपुलेशन मान करके अपना सैंपल उसमें से चूज करते हैं। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ सेलेक्टेड यूनिट्स, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये मैंने शेयर भी कर दी हैं यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में भी, तो आप स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन्हें पढ़ लें, और कोई भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो उसे इजीली समझ सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपनी स्लाइड्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के पास मटीरियल होगा तो आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को करते हैं तो सिंपल रैंडम और रैंडम एक जो वर्ड है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो रैंडम का मतलब ये है कि आप रैंडमली कहीं से भी किसी को सेलेक्ट कर लो, आप बायसनेस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है दैट कंप्लीटली represents the unbiasedness in your data. So in systematic sampling that will also move towards that. Systematic में जनरली क्या होता है कि सपोज आपके पास 100 लोग हैं, and out of these 100 people you want to select, again I'm saying 10, it may be 20, so अगर आपको उनमें से कोई 10 लोगों को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, उन सभी को एक नंबर दे सकते हैं जो कि 1 to 100 तक होगा, और आपको उसमें से सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है, तो आप उस नंबर के बेसिस पर एवरी 10th जो पर्सन होगा आप उसे चूज कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है कि हम एवरी 10th पर्सन को ही सिर्फ चूज करेंगे, लेकिन जैसे ही आप 1 to 100 उनको नंबर दे रहे हैं तब तक हर किसी को ये लगता है कि आई हैव ऑल्सो अ चांस टू बी सिलेक्टेड देयर, कि हो सकता है मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने नेक्स्ट रूल उनको डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट रूल अभी आपने क्या सोचा कि यू विल टेक ओनली 10th 20th 30th एंड 40th और 50th और दिस नंबर एज अ सैंपल, बट आप उसकी जगह ये भी कह सकते हो कि आप फर्स्ट नंबर, 11th नंबर, 21st नंबर या 31st नंबर इनको भी आप चूज कर सकते हैं। तो जब तक आप उनको नंबर दे रहे हैं तब तक ईच एंड एवरी वन हैज इक्वल नंबर ऑफ चांसेस टू बी सेलेक्टेड। बट जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जैसे आप नेक्स्ट रूल उनके सामने डिस्प्ले करते हैं कि आई विल टेक ओनली द 10th नंबर पीपल और द मल्टीपल ऑफ 10th जो भी नंबर होगा उसी को हम सिर्फ अपने सैंपल में चूज करेंगे। तो जैसे ही आप ये नंबर देते हैं तो जितने भी जो मल्टीपल ऑफ 10th या 10th के टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर्स वो अपने आप को उस ग्रुप से बाहर समझना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि तब उस केस में ईच एंड एवरी पर्सन हैज नो चांस टू बी सेलेक्टेड, फिर वहां सिर्फ वही 10 लोगों के पास वो डाटा रहता है और 10 लोग ही सिर्फ उसमें से निकल करके बाहर आते हैं। लेकिन हाँ, जैसा हमने प्रोबेबिलिटी में बताया कि प्रोबेबिलिटी मींस दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल नंबर ऑफ चांसेस, तो सभी के पास चांस होता है। तो जब तक उन 100 लोगों को हम लोग कोई एक नंबर नहीं देते हैं तब तक हर किसी के पास एक ही ऑप्शन रहती है, विंडो ओपन रहती है कि यस मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। बट सिस्टमेटिक में ये थोड़ा सा एक एरर है, या हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो सकता है कि हम सिर्फ एवरी 10th या एवरी 5th या किसी और नंबर को ही चूज कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स you are making a kind of system for choosing the sample। और अभी आपको बताएं कि ये होमोजेनिटी और जो आपका रैंडम सैम्पलिंग है उससे आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बट आप अपने काम को कई बार बहुत इजीली करने के लिए या कई बार उसको एक सिस्टम में लाने के लिए इस तरह की अप्रोच को भी फॉलो करते हो। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ your probability sampling. We can use this technique for choosing our sample. Next. यही वही चीज मैंने अभी आपको बताई है, जैसे कि इन्होंने कुछ लोगों को यहाँ खड़ा किया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि एवरी थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सैंपल। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इस तरीके से आपकी चलती है। आप किसी भी नंबर को कोई डिफाइन मतलब एक सिस्टम होगा, ये नहीं कि आपने अभी एक थर्ड पर्सन को चूज किया फिर आप नेक्स्ट को चूज करने के लिए कह रहे हैं नहीं नाउ आई विल टेक द फोर्थ पर्सन। नहीं, आपको एक सिस्टम फॉलो करना है तो आप उस सिस्टम को ही फॉलो करेंगे कि एवरी थर्ड पर्सन, एवरी फोर्थ पर्सन, एवरी थर्ड 10th पर्सन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। नेक्स्ट। इसके भी कुछ फायदे हैं और इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें आपको एक बायसनेस देखने को मिल सकती है बट ऑन द सेकंड लेवल। ठीक है, तो आप डिसएडवांटेज में देखेंगे यहाँ एक बायसनेस का फैक्टर आ जाएगा। बट इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन दैट इट इज अनबायस्ड, बट somewhere it may be biased।
right? So in systematic it may be biased. So advantages, it is sample easy to select, कि आसान है बहुत easy इसको select करना, आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. Suitable sampling frame can be identified easily, and sample evenly spread over the entire reference population. So these are the advantages of it. But in disadvantages, as I told you, the first point is sample may be biased. हो सकता है ना biased, क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड कंडीशन दे देते हो कि मेरे को हर 10वां आदमी चाहिए, मेरे को हर 5वां ही व्यक्ति चाहिए, तो इसका मतलब बाकी तो ऑटोमेटिकली यही सोचेंगे ना कि भाई हमारा तो चांस ही नहीं है सेलेक्ट होने का. सो देयर मे बी अ बायसनेस इन दिस technique, and difficult to assess the preciseness of estimate from one survey. कि ये आपको हर किसी में मिलेगा पॉइंट, कि जरूरी नहीं है कि आप जब अपना सर्वे कर रहे हैं, सैंपल को चूज कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट हों. वो तो आपको एरर यहाँ भी देखने को मिलेगा. तो जो सेकंड वाला जो डिसएडवांटेज है वो मोस्टली आपको हर जगह पर देखने को मिल सकता है. बट हाँ, फर्स्ट डिसएडवांटेज वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. यस, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है उसमें बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स काफी ज्यादा हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आप डिफरेंट स्टेटस बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके उस टॉपिक के अंदर रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन एरियाज भी हैं, सेमी अर्बन एरियाज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, और पर्टिकुलर कुछ और भी एक आधे ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो जब हमारे पास ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो जनरली ऐसे सिचुएशंस में हम स्ट्रेटास बनाने की कोशिश करते हैं. तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है उसके अंदर आपके पर्टिकुलरली कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उन ग्रुप्स में एक चीज कॉमन होती है कि सपोज वो लोग रूरल से हैं तो ऑल द पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम रूरल ओनली. तो एक आपका स्ट्रेटा रूरल से बन जाएगा, एक आपका स्ट्रेटा अर्बन एरिया से बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी से बनाना है वहां से बन जाएगा. और ऐसे ही फिर आपके जो आपने सपोज एक रूरल एरिया बना दिया, रूरल एरिया के अंदर आपने जो पॉपुलेशन रखी, that was representing a heterogeneity in which you are having male and female students. But if your topic is segregating male and female as well, then again from rural you are making two more stratas. One will represent the rural boys, one will represent the rural girls. तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटा बना सकते हो. तो स्ट्रेटा के अंदर बेसिकली ग्रुप है जो कि एक पर्टिकुलर कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. और नाउ आउट ऑफ दीज स्ट्रेटास you can apply systematic sampling. Now you can apply simple random sampling. So you can choose your sample by applying these techniques as well. So stratified sampling is basically used when you have a heterogeneity in group, when you have more variables in your study, then generally we use the stratified sampling. Next is stratified sampling. As I told you about this stratified sampling, but one thing, drawbacks again I will explain. To use stratified sampling, we have certain drawbacks as well. First is sampling frame of the entire population has to be prepared separately for each strata. कई बार क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप उनके स्ट्रेटास बना लो. तो आप जनरली करते क्या हो, या जनरली एक रिसर्चर क्या करता है, ठीक है, आपका मतलब सिर्फ आप ही नहीं हो, एक रिसर्चर जनरली क्या करता है कि वो अपनी कन्वीनियंस को देखता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अगर उसे रूरल पॉपुलेशन को जाकर के अपना डाटा कलेक्ट करना है तो वो रूरल पॉपुलेशन में जाता है, रूरल स्कूल में चला जाता है, और वहां से वो मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट करने होते हैं वो उनको इजीली सेलेक्ट करने की कोशिश करता है. लेकिन जनरली वो यहाँ क्या करता है, रूरल में पहुंच गया, मेल फीमेल के पास भी पहुंच गया, बट अब वो रैंडम सैंपलिंग की जगह ना जाकर के कन्वीनियंस सैंपलिंग की तरफ चला जाता है, यानी कि नॉन रैंडमाइजेशन की तरफ चला जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है कि सपोज उसको एक स्कूल के अंदर 10 बच्चे मिले हैं, 12 बच्चे मिले हैं, तो वो सिर्फ उन सभी को वो अपने सैंपलिंग के अंदर चूज कर लेता है, और उसके ऊपर कोई रैंडम टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता है, और उनसे डाटा को कलेक्ट कर लेता है. तो जनरली कई बार होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर एक रिसर्चर है वो नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ भी चला जाता है. तो जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं, बट मैंने जैसे पहले भी कहा था
कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या आप किसी एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग को यूज कर रहे हैं, जब तक आपका टॉपिक आपको अलाउ ना करे नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, तब तक आप एक ही तरह की स्टेट्स की टेक्निक में टिके रहें। तो अगर आप गांव वाले एरिया में जाते हैं, वहां के स्कूल्स में जाते हैं, स्टेटास आपका एक पार्ट है आपके रिसर्च डिजाइन का, तो आपको वो स्टेटास फ्रेम करने होंगे। फिर वहां से रैंडम टेक्निक या सिस्टमेटाइजेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, फिर सैंपल को लेंगे। तो आप उन पूरे तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस होते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा हमें ध्यान रखना है, और कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी भी टेक्निक्स हैं ये अपने आप में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन कई बार हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जब हमें अपने टॉपिक को डिफेंड करना होता है तो एक्सपर्ट्स जब हमसे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो हम उनका प्रॉपरली उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर आपको दोबारा से अपनी थीसिस या अपने साइनॉप्सिस या अपनी इन चीजों को रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका रिसर्च डिजाइन एप्रोप्रिएट हो, सैम्पलिंग टेक्निक सभी एप्रोप्रिएट हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपने कार्य किया। नेक्स्ट इज ये एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एक छोटा सा डिजाइन है कि पॉपुलेशन आपके पास देखिए पूरी हेट्रोजेनिटी को दिखा रखा है, उसमें से आपने स्ट्रेटास बनाए हैं, डिफरेंट 3 कलर्स में आपको दिखाए गए हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। तो आपने 3 स्टेटस वहां से बना लिए हैं, 3 आपके डिफरेंट। अब वो जो 3 स्टेटस बनाए हैं वो एक होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले आपके पॉपुलेशन एक हेट्रोजेनियस ग्रुप था, आपने उनमें से डिफरेंट स्टेटस बनाए। अब इसके ऊपर आपने रैंडम सिलेक्शन अप्लाई किया, या आप सिस्टम जो सैम्पलिंग है उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, और आपने हर एक ग्रुप में से 2-2 लोगों को सेलेक्ट किया, और टोटल जो आपके पास एक सैंपल है इस पूरी पॉपुलेशन में, ये 6 लोगों का इस तरीके से आपके सामने आ गया। तो आपका जो ये प्लान है वो पूरा इस तरीके का आपको शो भी करना है अपने साइनॉप्सिस में, ताकि जो भी एक्सपर्ट वहां बैठे हों, जो भी आपकी फैकल्टीज वहां बैठी हों, उनको देखते ही पता चल जाए कि हाँ आपने काम बहुत सिस्टमेटिक किया है। तो उनको कहीं कोई एरर दिखाई नहीं देगा, तो आपके टॉपिक के रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होंगे, और आप अपने टॉपिक को बहुत एक स्मूथली आगे तक लेकर के भी जा पाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा क्लियर रहें, कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने सैंपल को चूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एक ये भी एग्जांपल है। तो जैसे ही इन्होंने विमेन और मैन के जो ग्रुप बनाए हैं, इनमें से भी किसी भी हम 3 लोगों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक इजीली इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए। हाँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और इसे आप पढ़ सकते हैं खुद अपने आप। नेक्स्ट स्लाइड। इसे भी स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्लस्टर सैम्पलिंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज करना है या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज करना है। अभी तक आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को देखा, अब हम देखेंगे कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। मैं इस स्लाइड को भी स्किप करना चाहूंगा, एक डायग्राम आगे आपको मिलेगा, और उस डायग्राम से मैं थोड़ा सा आपको इजीली समझा पाऊंगा कि आप कैसे क्लस्टर को यूज कर सकते हैं और कहाँ पर आप लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज करते हैं। बट जनरली क्या होता है, क्लस्टर और सैम्पलिंग मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वी शुड यूज, और कई बार क्या होता है वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, और उन्हें ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने क्लस्टर का यूज किया है और या फिर उन्होंने आपका सर्टिफाइड सैम्पलिंग का यूज किया है। तो एक डायग्राम है, मैं उसके थ्रू आपको थोड़ा बेटर अच्छे से बता पाऊंगा कि किस तरीके से क्लस्टर और सैम्पलिंग टेक्निक्स अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायग्राम है आपके पास कि हाँ ठीक है, आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिफरेंस है हम डायग्राम से समझ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, आपने स्ट्रेटिफाइड में आपने क्या देखा, आपके पास एक हेट्रोजेनिटी थी, और उसमें से आपने अलग अलग होमोजेनियस कुछ ग्रुप्स को बनाया, और जो ये होमोजेनियस ग्रुप है आपने उनमें से फिर रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टम सैम्पलिंग का यूज करके आपने उनको वहां से अपने सैंपल को कलेक्ट किया। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में जो मेजर डिफरेंस आता है वो है होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं,
तो आपको इन टर्म्स पे बहुत बारीकी से जाना है कि सैंपल साइज आपका क्या है, सैंपल यूनिट क्या है, सैंपलिंग डिजाइन पूरा इनके बेसिस पर कैसे बनेगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन में भी होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आपने देखा कि आपने हेट्रोजीनियस में से कुछ होमोजीनियस ग्रुप बनाए एज पर योर वेरिएबल्स इन योर टॉपिक, और उसमें से फिर आपने रैंडम सैंपलिंग या सिस्टम सैंपलिंग का अप्लाई करके अपने सैंपल को चूज किया। अब क्लस्टर में देखिए क्या है, क्लस्टर में आप लोगों ने क्या किया है, क्लस्टर के अंदर आपके पास हेट्रोजीनियस ग्रुप होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे वो एक कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो 4 आपके पास ग्रुप है, 4 हमने ग्रुप बनाए हुए, 4 हमने स्ट्रेटिफाइड के, 4 हमने क्लस्टर सैंपलिंग के। तो क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर आप देख रहे हो 2 हमने ग्रुप्स को सेलेक्ट किया है, दोनों ग्रुप्स को कंप्लीटली सेलेक्ट करना है, आपको किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में से सैंपल को चूज नहीं करना है। तो आपके पास यहाँ 4 ग्रुप हैं, अब 4 में से हम किसी 2 ग्रुप को रैंडम टेक्निक या सिस्टम टेक्निक के बेसिस पर चूज कर लेते हैं। तो क्लस्टर के अंदर जो मेजर डिफरेंस होगा, आपके पास जो ग्रुप होंगे वो हेट्रोजेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और आप उस ग्रुप के सभी इंडिविजुअल्स को अपने सैंपल का हिस्सा बनाएंगे। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि क्लस्टर सैंपलिंग लेते समय आप लोगों के पास इस तरीके के ग्रुप हों या इस तरीके के आपके पास वेरिएबल्स हों जहां पर आप हेट्रोजेनिटी और एक कंप्लीट ग्रुप को ले रहे हो, तभी आप क्लस्टर का यूज करें, वरना स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का यूज करें। और मेजरली स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ही हम यूज करते हैं, क्लस्टर बहुत कम यूज होती है, बट कुछ टॉपिक्स के अंदर हम क्लस्टर को भी यूज कर सकते हैं। बट जो मेजर डिफरेंस है, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, कंप्लीट ग्रुप एंड दूसरे में आपके पास सम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो इन 2 डिफरेंस को आपने क्लस्टर और सैंपलिंग में याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। लास्ट हम 5 और 10 मिनट्स हार्डली लेंगे और आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वेयर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज नॉट इक्वल नंबर ऑफ चांसेस टू बी सेलेक्टेड, और बेसिकली दिस काइंड ऑफ टेक्निक वी जनरली यूज विद आर कन्वीनियंस। हम अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो हम अपनी सहूलियत का ध्यान कब रखते हैं, जब हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हम जनरली ऐसे सिचुएशन में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कोई गलत टेक्निक है या इससे आपको डाटा एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से भी डाटा एक्यूरेसी, आपके रिजल्ट्स, ये सब चीजें बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, बट यू हैव टू डिफाइन or the researcher or the person those who are associated with you. For example, जब भी आप किसी रिसर्च को करते हैं तो आप अपने दोस्तों से भी हेल्प लेते हैं, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, गाइड हैं, आप उनसे भी हमेशा टच में रहते हैं। तो आप उनसे हमेशा पूरी गाइडेंस लें, उनसे पूरी हेल्प लें, जो भी आपसे नॉलेजेबल पर्सन है आप उससे हमेशा जुड़े रहें कि आपको किस तरह की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करना चाहिए। वो आपके टॉपिक को, आपके वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर आपको इस चीज के बारे में बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। बट जनरली क्या होता है कि हम लोग खुद अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं और हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए कन्वीनियंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डाटा वहां से लेना शुरू कर देते हैं। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमेशा इस तरीके से आपको यूज नहीं करनी है। यहाँ बहुत लिमिटेड आपके पास जब रिसोर्सेस हो तभी हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाना चाहिए। जब पॉपुलेशन साइज बहुत आपके पास कम हो तभी हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसमें भी जो हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, तो वहाँ 1-2 टाइप्स जो भी यहाँ लिखे हुए हैं हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। इंसिडेंटल सैंपलिंग, इंसिडेंटल या हम उसे कहें एक्सीडेंटल, तो भी जनरली क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, सपोज आप रिसर्च हो, रिसर्च एक रिसर्चर हो, रिसर्चर को बहुत सर्वे भी करना पड़ता है, इधर उधर आना जाना भी बहुत पड़ता है। तो कई बार सपोज वो बस से ट्रैवल कर रहा है, कई बार वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, और उसको ट्रेन में, बस में अपने साथ बैठे हुए कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जो कि उन्हें लगता है कि हाँ मैं इनसे डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप तुरंत उनको अपना जो भी टेस्ट आपके पास होता है वो उन्हें दे देते हैं, उनसे डाटा भरवा लेते हैं और ले लेते हैं। तो ये आपका इंसिडेंटल एक्सीडेंटल लर्निंग आपका कहलाता है, सॉरी सैंपलिंग कहलाता है, कि जहां से आप सैंपलिंग को
प्लान्ड नहीं था, इट वाज अनप्लान्ड, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से भी मैं अपने डाटा को कलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप ऐसे सिचुएशन में उनसे डाटा भरवा लेते हैं और उनसे डाटा को अपना इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। तो इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कुछ इस तरह की होती है कि आप लेकिन इसके लिए आप रेडी हमेशा रहते हैं, आप अपने पास सारा सामान हमेशा रखते हैं, कब किस समय आपको उसकी जरूरत पड़ जाए आप उसी समय अपने डाटा को फिलअप करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में देखा ना, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वी ऑलवेज कम अप विद द प्लान, कि आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन होगा कि आपको इतनी तारीख को इतने बजे इस स्कूल में जाना है, इन टीचर से मिलना है या इन स्टूडेंट से मिलना है, सब चीजें प्लान होंगी। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बहुत सी चीजें प्लान नहीं होती हैं और आप विदाउट प्लानिंग आगे चलते हो और अपने डाटा को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट, पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो मेन पर्पस क्या है, आपका जो थीम है, आपका जो टॉपिक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कई बार सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हो और सिर्फ ये सोचते हो बस मुझे किसी भी तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, मुझे अपना पर्पस पूरा करना है, मैं सिर्फ इसी के लिए अपने काम को कर रहा हूँ। तो आप जनरली सिर्फ उसी डाटा को चूज करते हो, आप फिर और किसी डाटा की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो जो आपका पर्पसिव सैम्पलिंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस होता है वो आपके अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है, या आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आपको पता है कि पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ यही ऐसे लोग हैं जो मेरे को डाटा दे सकते हैं और एक मेरा पर्पस उससे फुलफिल हो जाएगा, तो सिर्फ आप उस तरफ जाने की कोशिश करते हो। और कई बार आप ऐसा भी सोचते हो कि जैसे आप ट्रेन में बस में जा रहे हो और आपको ये लग रहा था कि आपको 10 लोगों की जरूरत है और आपको ऐसे सफर करते करते वो 10 लोग पूरे मिल गए हैं, तो आपका पर्पस वहीं कंप्लीट हो जाता है और आप अपने आप को रोक देते हो। लेकिन ये चीजें प्लान्ड नहीं होती हैं, ये सब चीजें आपकी अनप्लान्ड होती हैं और आप कभी भी इन डाटा को कहीं से भी कलेक्ट कर लेते हो। तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपल जो है वो पूरे होने चाहिए, आपका पर्पस एक तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके बेसिस पर हम पर्पसिव सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग आपने पढ़ी है उसी का ही फॉर्म है कि कोटा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आपने क्या देखा कि डिफरेंट स्टेटास बनाए और रैंडम सैंपलिंग या सिस्टम सैंपलिंग का आपने यूज किया। इन कोटा सैंपलिंग ऑल्सो वी फ्रेम सम काइंड ऑफ स्टेटास, बट यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग का या फिर आप सिस्टमेटाइज सैंपलिंग का यूज नहीं करते हो, आप डायरेक्ट फिर वही जैसा मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी में बताया था कि आप स्ट्रेटिफाइड बनाने के बाद रैंडम या फिर सिस्टम उसको फॉलो करते हो, ऐसे ही कोटा के अंदर आप लोग रैंडम और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आप नॉन रैंडमाइजेशन यानी कि कोटा बनाने के बाद फिर आप अपने पर्पस की तरफ चले जाते हैं, फिर एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अपने माइंड में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को फोकस रखते हैं। स्ट्रेटा का फोकस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने डाटा सिर्फ मेल स्टूडेंट से भरवाना है, तो आप उस सफर में फीमेल अगर स्टूडेंट होंगे तो उनसे आप ये डाटा भरवाएंगे ही नहीं, आप सिर्फ मेल डाटा से ही अपने इस डाटा को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक डाटा अभी अपने पास एक डिफाइन कर लिया है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा अपने आप को स्टिक रखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज बस सिर्फ इसमें ध्यान रखनी है, कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड आर सेम, बट one is randomization, another is non-randomization. Next is स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चला, स्नोबॉल यानी कि जैसे एक बॉल है जो कि स्नो की बनी हुई है, रोल करते हुए आगे बढ़ती रहती है तो उसका साइज बढ़ता रहता है, उसी चीज को हम स्नोबॉल सैंपलिंग में भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, एक तरह से रेफरल सैंपलिंग भी कहलाती है। रेफरल का जैसे कई बार आप लोगों के पास एक कॉल आती है, ठीक है, जो ये कहती है कि हम आपका क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, ये आपका लाइफ टाइम फ्री रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, वो सब कुछ रहेगा, आपको बहुत सारी स्कीम्स बताते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कि ठीक है मैं बनवा लेता हूँ, और जैसे ही आप बनवाते हैं तो उसके बाद वो कंपनी वाले आपको कहते हैं कि आप अपने एक दोस्त को भी रेफर कर सकते हैं, आप अपने घर में भी किसी और को भी रेफर कर सकते हैं, कि इसमें इतने सारे फायदे हैं। तो आप उनका काम अब आप कर रहे हैं, ठीक है, अब आप अपने दोस्त को बोलेंगे या अपने फैमिली में किसी व्यक्ति को बोलेंगे, फिर वो भी एक और कार्ड आपके लिए ऐसे ही क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं या फिर आपके दोस्त बनवा लेते हैं। तो आपका जो ये साइज है, वो जो मेन जो रिसर्चर था उसने सिर्फ एक जगह चैनलाइज किया और वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन सारा डाटा फाइनली आता कहाँ है, रिसर्चर के पास आता है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग एक इस तरह का डाटा होता है जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार एफर्ट करते हो और उसके बाद वो अपने आप चेन बढ़ती चली जाती है, और वो चेन जब तक आपकी एक डिजायर्ड
डिफाइंड लिमिट नहीं होगी। सपोज आपको 100 लोग चाहिए, आपके पास 100 रेफरल्स आ गए हैं, तो आप अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर देते हो। उसके बाद अगर और रेफरल आते भी हैं, आप उन पे काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट वहीं तक कंप्लीट हो जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए काइंड ऑफ रेफरल सैम्पलिंग भी कहलाती है, जहां आप उसे रेफर के थ्रू अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस का एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे एक लेडी आप देख रहे हो, लेडी क्या, एक गर्ल स्टूडेंट को हम कह सकते हैं, जो कि रिसर्च कर रही है। तो वो अपने घर की बालकनी में खड़ी है, बाहर देखा उन्होंने कि कोई एक व्यक्ति अपने डॉग को घुमा रहा है, और उनको लगता है कि ओह, मेरे लिए ये कन्वीनियंट टाइम है, मैं इनसे डाटा क्यों ना ले लूं। तो फटाफट से उनको आवाज लगाती हैं और कहती हैं कि भी मेरे को एक छोटी सी हेल्प आपसे चाहिए, और आप मेरे को कुछ डाटा दे देंगे। तो वो डाटा वो दे देते हैं। तो इस तरीके से भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम लोग कई बार डाटा कलेक्शन में यूज करते हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते हो। जब आपको लगे कि आप इस समय डाटा कलेक्ट कर सकते हो या ये व्यक्ति सही है डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आप उससे इजीली डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इनके अलावा दो और आपके सैम्पलिंग डिजाइन्स में आते हैं। एक है मल्टी स्टेज और मल्टी फेज। मैं इनको सिर्फ ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। आज जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा सेंसस 2027 फिलहाल चैनलाइज है हमारे समाज के अंदर, और आप देख रहे हो कि उसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट फेज में जब सेंसस के लिए हमारे पास व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने हमसे कुछ डाटा कलेक्ट किया था, डेट वाज रिलेटेड टू योर हाउस लिस्टिंग, मतलब आपके घर के बारे में था, घर में कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हैं उनके बारे में था। तो जो व्यक्ति आपसे डाटा कलेक्ट करने के लिए आए थे, जो भी एन्यूमरेटर्स आपके पास आए थे, तो उन्होंने एक सैंपल, यहाँ सैंपल क्या है, यहाँ कंप्लीट सैंपल को लिया जा रहा है। यहाँ पर हम किसी को एक पर्टिकुलर सैंपल को नहीं ले रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन को ले रहे हैं, बट हम उसे एक सैंपल मान करके चल रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके पास आया, उन्होंने आपसे डायरेक्ट एक डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, डायरेक्ट उन्होंने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में फीड किया और उसको लेकर के चले गए। अब वही व्यक्ति आपके पास फिर से आएंगे जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, जो भी एक सेकंड फेज की जो उनको डेट दी गई है, वो उस समय आपके पास फिर से आने वाले हैं। और अब आपसे वो कंप्लीट डिटेल एक एक इंडिविजुअल की आपसे लेंगे, और फिर वो डाटा कलेक्ट करके वापस ले जाएंगे, गवर्नमेंट को देंगे, फिर गवर्नमेंट उसे पब्लिश करेगी। तो अब यहाँ देखिए आपने क्या किया है, मल्टी फेज सैम्पलिंग का यूज किया है। मल्टी फेज एंड मल्टी स्टेज जो सैम्पलिंग है, दीज आर द प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ हर किसी व्यक्ति का उसके अंदर इंक्लूड होना जरूरी है, और हर कोई होता भी है। तो जनरली क्या है, अब यहाँ देखो आपका जो सैम्पलिंग है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो एक फेज अभी हुआ, एक फेज कुछ टाइम के बाद होगा, और डाटा कलेक्ट किया जाएगा। जनरली जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस करते हैं, तब मल्टी स्टेज मल्टी फेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट बनाते हो, तो आप देखते हो अभी आपने जो डाटा कलेक्ट किया, कुछ समय के बाद आपने कुछ वेरिएबल्स या कुछ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और वो 6 महीने बाद आपने उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर दोबारा से डाटा कलेक्ट किया। तो आपने अपने डाटा को दो अलग अलग फेजेस में आपने सेम नंबर ऑफ सैंपल के ऊपर आपने अप्लाई किया। तो वो आपका कहलाता है मल्टी फेज, जिसको हम अलग अलग फेजेस में उन्हीं लोगों से कुछ डाटा मांगते चले जाते हैं। तो मल्टी फेज है। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि आप कुछ स्टेजेस डिफाइन कर लेते हो, जैसे कि आपने एक कंट्री बनाया, उस कंट्री के अंदर स्टेट्स आपने बनाए, फिर उन स्टेट्स के अंदर से भी आपने कुछ ये हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो आपके स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आपने बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर आप पर्टिकुलरली बाइफर्केशन कर सकते हो, कुछ विलेजेस आपने बनाए। तो इस तरह के आप डिफरेंट उसके अंदर स्टेजेस बना लेते हो, जो कि एक डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, और आप उनमें से एक कुछ ना कुछ पार्ट एक सैंपल के तौर पर लेते चले जाते हैं। आपने स्टेट्स में से भी लिया, डिस्ट्रिक्ट में से भी लिया, और आगे में से भी लिया। एक तरीके से आपने जो स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग यूज की थी, वहां भी आप इस तरीके का कुछ देखते हैं। लेकिन इनमें स्ट्रेटिफाइड में और मल्टी स्टेज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं, कि जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग था उसके अंदर आपने होमोजेनिटी और इन चीजों का ध्यान रखा था, लेकिन जब आप मल्टी स्टेज की तरफ जाते हैं, तो आप इसके अंदर इन चीजों को ध्यान रखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बस आप ये चीज देखते हो कि आपकी जो टेक्निक्स हैं, जैसे रेंडमाइजेशन है या सिस्टमेटाइजेशन है, आपने उनका सही इस्तेमाल किया हो। तो स्टेजेस के अंदर जनरली क्या होता है, एक तरह से ये लेवल्स होते हैं। तो आप पर्टिकुलरली उन लेवल्स के थ्रू जाते हुए तब सैंपल को चूज करते हो। अब जैसे मैंने ये कहा ना कि आपने पर्टिकुलरली एक रूरल से या अर्बन से ही लोगों को चूज करना है,
तो आप पर्टिकुलरली एक रूरल और अर्बन में चले गए, वहां से आपने उसको चूज कर लिया सैंपल को। वो एक सिंपल तरीका था कि आप वहां चले गए और जाकर के आपने चूज कर लिया। लेकिन अगर हम मल्टी स्टेज से ही इसको लेंगे तो पर्टिकुलर हम पहले एक देशों को निर्धारित करेंगे, क्योंकि सभी देशों में रूरल है। फिर हम उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स को भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि सभी देशों में भी आपको डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, रूरल एरिया मिलेंगे, अर्बन एरिया मिलेंगे। तो आप पर्टिकुलरली सभी चीजों को एक तरीके से रैंडमाइज्ड कर रहे हो और तब जाकर के फाइनली अपने सैंपल को चूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो मल्टी स्टेज में कुछ इस तरीके का किया जाता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम अपने जो आपका आज का जो कार्यक्रम सेकेंड डे का है, जिसके अंदर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस एवरीथिंग। और अब अगर आप लोगों के किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हम उनको लेना चाहेंगे। आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं आप उनको रन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भी कुछ है वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू मे आस्क। Thank you very much, sir, for your such an enlightening, comprehensive, and thoughtful proving presentation. Your explanation various research designing, probability and non-probability sampling techniques and their practical applications has certainly enhanced our understanding and will greatly assist participants in their future research endeavors. Let us express our gratitude, sir. We shall now move to a question and answer session. Participants may be either raise their hands and post their question in chat box. युक्ता क्वेश्चन पूछिए। या तो लगता है Yes, sir. योगेश जी किसी को समझ नहीं आया है ना, और या सबको सब कुछ समझ आ गया है ना। Good afternoon, sir. Actually, I have a question. ओके, गुड आफ्टरनून। Sir, can you please explain once again the statics and parameter word that were there in sampling terms that you were explaining? Ma'am, in statistics, basically, generally, we will define that what kind of stats you will choose for, analyzing the data. So that statistics will represent particularly that thing. So in whenever you are, doing some kind of sampling, so your main focus is on the data collection and how you will, analyze your data. So that will define particularly that things. So in statistics, there are certain parameters. In parameters, generally we discuss about the descriptive statistics, and there is one more type of statistics, empirical statistics. So we will, fix the parameters that you will, analyze your data under your descriptive statistics or empirical statistics, or the statistics techniques which generally you will use to analyze your data. So these statistics and parameters will define these. Okay, so thank you. Okay. हेलो, And गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर, एक आइडियल सैंपल साइज क्या होता है फॉर थीसिस एंड फॉर रिसर्च पेपर एंड डेजिटेशन? सॉरी, एक बार रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? सर, आइडियल सैंपल साइज क्या होना चाहिए फॉर रिसर्च पेपर, थीसिस एंड डेजिटेशन? ओके, जैसा मैंने आपको देखिए पहले भी कहा था कि एक पर्टिकुलरली इस चीज को डिफाइन कर पाना या उसे एक लिमिट कर पाना कि दिस शुड बी द सैंपल साइज फॉर योर रिसर्च। बट हम एक मान करके चलते हैं कि एटलीस्ट जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका मिनिमम जो आपका सैंपल साइज है दैट शुड बी 30। ठीक है, उसको 30 एक स्टैंडर्डाइज की तरह मान सकते हैं, बट इट इज नॉट एक्यूरेट कि आप 30 को ही लेकर के चलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, योर वेरिएबल्स, एंड the population which you have taken, or the sample which you want to take from that. It all depends on these factors, that what kind of sample size should be useful for you. Okay. ओके सर, थैंक यू। Okay.
Thank you, sir, for your addressing all the queries and providing valuable clarifications. Thank you so much, sir. You're welcome, sir. As we approaching the conclusion for today's session, I invite Dr. Babita Bharadwaj, Assistant Professor, Army Institute of Education, to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Yes, good afternoon, everyone. सभी को मेरा नमस्कार। Namaskar, ma'am. कल हमने बात की थी बूंदों की जो मिलकर मिलकर सागर बनाती हैं। आज का यह सत्र भी उसी सागर में एक और बूंद को जोड़ता है। As we come to an end of day 2 of this student faculty development program, I am honored to propose vote of thanks on behalf of Army Institute of Education, Greater Noida. This program is a collaborative effort of Army Institute of Education, CTPD India, and Satyam College of Education. So I extend my sincere thanks to CTPD India and Satyam College of Education for their collaborative efforts in organizing this 7 days student faculty development program. My sincere thanks goes to our resource person, Dr. Manoj Kumar Sharma sir, Assistant Professor, Kanhaiya Lal DAV, PG College, Roorkee, Haridwar, for his valuable session on research design and sampling techniques. सर ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि एक अच्छा रिसर्च डिजाइन और सैम्पलिंग टेक्निक किसी भी शोध को किस तरह से विश्वसनीय और सटीक बनाती है. Sir, use of everyday and relatable examples made the complex research concepts feel simple and within everyone's grasp. I think everyone will agree with my words. Sir, illustrations in your presentations made the concept of research design and sampling So there was a technical glitch. It is out of our control. Sir, we are truly thankful for the time and efforts you invested in delivering such a well-structured and thoughtful session for us. It has added a great value to our understanding of research. Thank you very much, sir, for your insightful lecture. I express my gratitude to Dr. Abhilasha Gautam, Principal, Army Institute of Education, for her warm welcome address, which set a positive tone for today's session. मैम, आपका निरंतर मार्गदर्शन ही इस कार्यक्रम को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है. It is your vision and support that continue to shape this student faculty development program into a truly meaningful learning experience. I also thank management of Army Institute of Education for their constant encouragement and for creating opportunities like this for students, faculty members, and research scholars. I also thank participants for staying attentive and asking thoughtful questions. आप सभी की सक्रिय भागीदारी ही इस कार्यक्रम की असली सफलता है. I would like to express my appreciation to my colleagues for their constant cooperation and team spirit, जिसके बिना यह कार्यक्रम इतने सुव्यवस्थित ढंग से चला पाना संभव नहीं था. A special thanks to our technical support team, particularly Manoj sir, Computer Lab Assistant AIE, for ensuring smooth connectivity and seamless coordination throughout the session. Every drop we add today brings us one step closer to the vast ocean of knowledge we are building together. Let us continue this journey together until we reach our ocean of knowledge. May the days ahead in this student faculty development program bring us even more learning, growth, and inspiration. Dhanyavad. Jai Hind.
Thank you, ma'am, for your expressing gratitude on behalf of all participant and organizer. Dear participants, with this, we've come to end of the second day of our student and faculty development program. Today's session has reinforced the importance of selected approach, research designing, and sample techniques for concluding and meaningful research. We thank our esteemed resource person, respective principal ma'am, organizing committee members, and all participants for the active involvements. जय हिंद। और अटेंडेंस के लिए आपका every session send the attendance link to all participants, mark your attendance, and assessment last complete of the all sessions, and Sunday 9 to 10 1 hours open the assessment link and all question relating all sessions. To all participants, complete your attendance and assessment on Sunday. तो सभी अपना अटेंडेंस का और असेसमेंट का ध्यान से अपना कंप्लीट करना है, तभी आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो अभी ग्रुप में आपका जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अटेंडेंस लिंक और असेसमेंट लिंक आपका संडे में शेयर करवा जाएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। Dear participants, you can switch on your camera for group photo. For today's Excuse me, sir. Yes. Good afternoon, ma'am. गुड Hello. आफ्टरनून। सर क्या हम लोग को आज का अटेंडेंस का लिंक मिलेगा सर? आज हमें भरना है अटेंडेंस लिंक। Yes, you share in the WhatsApp group. Manoj sir, Okay, Manoj okay, sir, thank you. please share the attendance link you, in the sir, thank chat box here also. We can keep the meeting open for another 5 minutes. Please share the attendance link in the chat box here in the meeting also. Okay, ma'am. Abhilasha ma'am, may I leave now? Sir, thank you so much. You're welcome, ma'am. Thank you, sir. Anytime, ma'am. Thank you so much for your time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Babita ma'am. Thank you, Yogesh sir. Thank you, Thank you. ma'am. Thank And you so thank you much, all sir. the dear participants. Thank you so much. Thank you so much, sir.